هذا गाने गा रहे हैं लोग हम बोलते नहीं हाँ यार लगला है खाने का मूड नहीं है हर अच्छी चीज हर वक्त अच्छी नहीं होती نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد यकायक पर्दाए गैब से निदा हुई इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा हम ज़मीन में इंसान पैदा करके उसको अपना नायब बनाकर उसके ज़रिए से अपने अहकाम ज़मीन में जारी करेंगे। ये निदा सुनकर सारा आलम हैरत था कि फरिश्तों के जैसे मखलूक होते हुए फिर इंसान पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। म्यूट करने म्यूट करने कि फरिश्तों की जैसी मखलूक के होते हुए फिर इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत थी। फरिश्तों के और जिन के ताज्जुब की तो कुछ हद न रही। इंसान जिसका मादा और खमीर ऐसे अजसाम मुख्तलिफ तबाह से होगा जिसको क़ुव्वत शहविया और ग़ज़बिया लाजिम है, इससे ख्वाह मुख्वाह फसाद ज़ुहूर में आना ज़रूरी है। तो जो मखलूक जिसमें दो बुरी क़ुव्वतें और एक क़ुव्वत अक़लिया उम्दा हो उसका पैदा करना भी मुक़्तज़ा हिकमत नहीं, चाहे जाए इसको खलीफा बना दिया जाए। रही आपकी तस्बीह और तक़दीस सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन कहना, इसके लिए हम मलाइका मौजूद हैं जिनमें क़ुव्वत ग़ज़बिया और शहविया का मादा ही नहीं। Suddenly Allah subhanahu wa ta'ala declared, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. I'm going to make my vicegerent in this dunya. He's going to be my khalifa.
We are going to create a Khalifa, and we are going to create such that he would fulfill the orders of Allah. So when this thing came out, everybody was amazed. We have creation like angels. So why do you need to create a human being? And because the angels, they saw how the human being was made. So they said that he is made from those ingredients. They would have two issues with them. One is anger, and the second one is desire. दो चीजें इस तरह से बनाया गया, इसमें दो चीजों का होना जरूरी है. They said that the way he has been made is going to have anger in him. It's natural. To be angry is natural. And to have desires is also natural. अपन का चलना natural है. आपको बनाया गया, गुस्सा तो आएगा. लगाम देना कमाल है. To have desire and to have be angry, this is how you have been made. But reigning it is the actual. Acha. So when these two things is going to be there, desire, why there's going to be a fight? Why, when the desires are made, there's definitely fight will take place. Example, this is I want. Same thing he also wants. Now what will happen? Both want the same thing. It's only one there. I also want it, he also wanted. Acha, not only that, I want everything. He also wants everything. लड़ाई होगी नहीं हुई. I want everything. I want everything. He says, I want everything. Both of them want everything. So the fight has to take place because the desires are there. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. You're creating a creation of Allah who is going to do fasad. They will create chaos. They will fight. And then they would kill, they would shed blood. قال إني أعلم ما لا تعلمون. أبكي. He said that Allah subhanahu wa ta'ala not good. Said that this is natural to have. قال إني أعلم ما لا تعلمون. You do not know what I know. Then Allah subhanahu wa ta'ala
There's one more thing. First of all, he said that you're going to create somebody uh, who's going to fight. Even the creation of this species is a question mark. On top of that, you want to make him your Khalifa also? That's an amazing thing. Not, he is, we want to make him Khalifa on top of the things which he's doing. What do you take from? And the talk of when this is tasbih and taqdees, praising Allah, glorifying Him, we are already doing it. So first, the angels had uh, this issue that I don't know. This is what is going to happen. So the angels, फरिश्तों ने एतराज़ हसद के तौर पर नहीं, उनके नहायत अज्ज़ व इनकिसारी से और इब्लीस ने गुरूर और हसद से सवाल किया. The both of them asked a similar question. One asked with a lot of humility and one asked with a lot of jealousy. Same question, two people are asking. One is asking with humility to get the clarification, and the second one is asking out of jealousy for criticizing. Yeah. Yes, he is doing this for criticizing. The second one is doing this for the Iblis. Yeah, the Iblis. Iblis is the same question was put by Iblis and the angels. The angels, they asked this out of humility. They had this ishkal. Ishkal means they want to get the clarification. Allah, you're creating somebody who is أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Allah, you're creating somebody who is going to do fasad and would shed blood. The same question was put by Iblis, but his question was filled with jealousy and anger and pride. Exactly. Jealousy and pride. Angels had humility, عجز وانكسار, تواضع, كانوا متواضعين الملائكة. So they had this, the same question is put with two different feelings inside. That's why somebody asks a question, the same question is put by somebody else. So the answer will be different to both of them, depending upon with what was inside when he's asking. So they both will get different answers. That is the reason you see Rasulullah sometimes asking, sometimes answering in a different manner. And Allah also in the same manner. Allah also sometimes He answers this. Somebody asks to clarification, He will do it. And to somebody He is going to under what is inside. He's asking question for what reason? Out of pride and jealousy, or out of humility and tawadu? Yeah. What is the reason he's asking this? أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. इंसान को पैदा किया, फसाद मचाएंगे, खुरजी करेंगे, ऊपर से उसको आप खलीफा बना रहे हैं.
So when he asked this question, both of them actually asked. Iblis also asked, and angels also asked. But the Iblis, his question, his asking was full of jealousy and full of pride. Angels, they were asking out of humility and tawadhu. So when somebody asks with jealousy and pride, what Allah does, the answer is over you. इब्लीस तो मुखातिब बनाने के काबिल नहीं था. फरिश्तों को अपना मुखातिब बनाकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे फरिश्तों, तुम्हारी नज़र इंसान के ऐब पर और अपने हुनर पर पड़ी. उनके हुनर और अपने ऐब को भी कुछ सोचे. इनके फसाद का ख्याल आया. इनकी सलाह व तक़वा क्यों याद न आया. इनकी खुरेजी को तो देखते हो, उनकी इश्करेजी क्यों पेश नजर न हुई. उनकी लग़ज़श और गुनाह पर तो नजर पड़ी. उनका वो फरियाद और नाला क्यों नहीं दिखाई दिया. उनकी मासियत तो देखी, हमारी मग़फ़िरत क्यों न देखी. उनकी गुनाह तो नजर आए, उनका नूर ईमान क्यों नजर नहीं आया. उनका हिर्स व शहवत से भरा हुआ तन तो दिखाई दिया. उनके इश्क व मोहब्बत से भरा हुआ दिल क्यों तुम्हारे सामने नहीं आया. उनका नाज और नेमत में पला हुआ तन तो देखा. उनका दर्द भरा हुआ दिल क्यों न देखा. उनका नाज तो पेश नजर हुआ, उनका नियाज क्यों तुम्हारे सामने नजर नहीं आया. उनके दामन आलूदा को तो देखा, उनके गम फरसुदा दिल क्यों नहीं दिखाई दिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब्दुल्ला शाह साहब की बात है. The amazing things he's saying. He's saying, so when he asked, what is this? So because Iblis was asking this question full of pride and so he was not worth answering. Somebody who's filled with jealousy and pride, it's not worth answering to him. So क्या जवाब दे. के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया. Yeah. तो वो मुखातिब होने के काबिल नहीं. He's not worth answering. So Allah did not look at him, did not even answer him. Because his question is filled with pride and jealousy. So Allah now looks and Allah answers the angels because they ask with humility and tawazu. What is tawazu? I think humbleness. Humbleness and humility is similar. So Allah said, "Oh angels, you saw the humans' deficiencies, and you saw the अपने हुनर. You saw their deficiency, and you saw your own capacity, skills or capabilities. O angels, you saw the humans' deficiencies, and you saw your own capacities and capabilities. This is what happened. उनके हुनर और अपने ऐब को भी सोचे. It should also be you should also have looked at their capabilities and capacities, and you could have looked at your own mistakes and faults also. You thought about the chaos which they will do. You never thought about the salah and taqwa they would have. You saw that they would shed blood, but you never thought that they would shed tears too. You thought that they are going to shed blood.
You forgot that they'll shed tears too. Why couldn't you see that? You saw their mistakes and their sins. How come you never saw the tears which they would flow? You saw their sins. How come you never saw our forgiveness? Because they would commit sins. You did not see our forgiveness? You saw their greed and desires. You saw their body of greed and desires. You didn't. How come you did not see the heart filled with the, or filled and drenched with the love of Allah? How come you couldn't see that heart? You saw the body of desires and the body of greed. How come you did not see the heart of love and drenched with the love of me? You saw their body who has been accustomed to the comforts. How come you never saw that painful heart which pulsates only for me? You saw that they were नाज तो पेश नजर हुआ उनका नियाज तुम्हें क्यों नजर नहीं आया बस नाज और नियाज you saw their नाज को क्या तर्जुमा करें नाज सबको लगाया ना नाज नाज प्रॉब्लम नखरों को क्या तर्जुमा करेंगे तो बड़ी रोमांटिक लैंग्वेज है नखरे का तर्जुमा you saw their you saw their fussiness being fussy you saw that they're being fussy but you never saw their humility. You saw that the human being becomes fussy sometimes. You do not see the humility which they have. उनके दामन आलूदा को तो देखा उनके गम फसूदा दिल क्यों नहीं दिखाई दिया You saw their hands and all the wrong things. How come you don't see that heart which is full of repentance? If the hands are drenched in the sins, how come you do not see that heart which is pulsating because of repentance? You see the difference is making, comparing. मेरे फरिश्तों जैसे अपनी तस्बीह को देखते हो ऐसी इनके आशिकाना गुदास को भी तो देखो जैसे अपनी तहमीद को देखते हो ऐसे ही इनका चीख और पुकार को भी तो देखो जैसे अपने अनवार को देखते हो ऐसे उनके असरार को भी तो देखो जैसे अपनी खिदमत को देखते हो ऐसी उनकी कुर्बत भी तो देखो जैसे अपने नूर ताअत को देखते हो ऐसी उनकी नाज मोहब्बत भी तो देखो जैसे अपनी मस्ती हमारे साथ देखते हो ऐसी हमारी दोस्ती उनके साथ भी तो देखो जी मेरे फरिश्तों मेरे रास्ते में खुद बीनी अच्छी नहीं मुझे तो लागर तन बस टूटा हुआ दिल चाहिए these words are very amazing so listen carefully
So Allah is saying, "Oh angels, you are seeing your own remembrance. How come you never saw their utmost desire towards me? You saw their praise. You saw your own praise with Allah. How come you don't see their crying in front of me? You saw your noor. How come you don't see the secrets which they have? The way you do the service, you saw your service. You need to see their closeness to me. How you saw the noor of obedience, see their love towards me. How you see you are with me, at the same time see our love, our friendship with Him. O angels, in my path, I don't like arrogance and ego. In my path, I want those weak bodies and the broken hearts. लागरतन लागरतन और टूटा हुआ दिल. अल्लाह ताला के सामने कमज़ोर जिस्म और टूटा हुआ दिल, क्योंकि कमज़ोर जिस्म तो उससे होता है खाने की कमी से, लेकिन खुदा उनको रोज़ी पहुंचाता है. खुदा की रोज़ी, आपका क्या ख्याल है साहबा को कौन रोज़ी पहुंचाता था? जो इतनी कमज़ोरी थी, जो उनके पास खाने को नहीं मिलता, एनर्जी कहाँ से आती थी? अल्लाह ताला की तरफ से. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास लागर तन और टूटा हुआ दिल चाहिए. He needs a weak body and a broken heart. इसलिए जब वो खाना में बैठते हैं, जिक्र करवाते हैं, तो भाई खाने पीने में ब्रेक लगाते हैं. खजूर पानी इसलिए होता है कुछ दिन तो थोड़ा सा इंसान करे. मेरे फरिश्तों, बादशाह के लिए जैसे खदम व हशम व शौकत व अजमत दिखाने के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही मोनस व महरम राज की भी ज़रूरत है ताकि इश्क व मोहब्बत का लुत्फ़ उठाए. इसी तरह सारा आलम खदम व हशम की तरह है जिससे मेरी कुदरत व सल्तनत ज़ाहिर होती है. इनमें से कोई मेरा मोनस व महरम राज होने के काबिल नहीं. किसी को इश्क व मोहब्बत करना आता नहीं. इंसान ही में मेरे मोनस व महरम राज होने की काबिलियत है. इश्क व मोहब्बत इंसान ही का खासा है. मेरे इश्क व मोहब्बत में उनके दिल की जलन और तड़प और बेचैनी मला आला के रहने वालों के दिल को हिला देगी. Angels, like the king has a king, he has this entourage. You know entourage? Why they have the entourage with the king? To show his greatness, right? The king goes with an entourage. And when the king wants to travel, so you have these motorcades, and you have these, police, and you have this army, and behind him is a big army, in front also big army. Why is this? Why this protocol is given? To show the value and the greatness of the king. Because of this. So like the king has this motorcade, at the same time king also has some
Somebody who listens to his secrets. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying the whole creation, this is the entourage of Allah. O human being, you are my bearer of my secrets. ताकि इश्क व मोहब्बत का लुत्फ उठाए, so that I can enjoy that closeness of love with you. सारा आलम हशम ख़दम की तरह मेरी कुदरत और सुल्तान ज़ाहिर होती है. The whole humanity, the whole creation shows my grandeur and my greatness. This is like my entourage and my protocol. But nobody has the capacity to hold on to my secrets. None of them has the capacity or the capability to love me. The only creation which has this is the human being. मेरे इश्क व मोहब्बत में उनकी दिल की जलन और तड़प बेचैनी मला आला के रहने वालों के दिल को हिलाएगी. Their love for me and their trembling for me is going to shake the people of Mala'i A'la, the one who are holding the Arsh of Allah. Their desires, their love for me and their trembling in love for me is going to shake the holders of the Arsh and the dwellers of the Mala'i A'la, the one who are the most closest to Allah. That their trembling of their heart is going to shake them up over there. This is Allah. So what do you think about the human beings? To the angels. ओ नाशुक्रा इंसान कुछ सुन रहा है तेरा मालिक तेरी तरफदारी में फरिश्तों को क्या कह रहा है उसकी मेहरबानी तो देख तेरी नाकरदानी को भी देख वो किस तरह तेरे पर मेहरबान और तू किस तरह उससे दूर और अनजान तू मोनिस व महरम राज देखा ही नहीं तुझे क्या मालूम वो कैसे होते हैं हम तुझे तेरी इबरत के लिए एक मुहर्रम राज की हिकायत सुनाते हैं He's saying, oh, ungrateful human being, the Sheikh is saying, oh, नाशुक्रा इंसान कुछ सुन भी तो रहा है कि तेरा मालिक तेरी तरफदारी में फरिश्तों को क्या कह रहा है Oh, ungrateful human being, are you listening? Look, your Lord is how much defending you in front of the angels. उसकी मेहरबानी तो देख और तेरी नाकदरी को देख. Look at his blessing upon you and look at your ungratefulness towards him. Look at how he is. Look at his mercy upon you and look at your ungratefulness towards him. किस तरह तेरे पर मेहरबान और तू किस तरह उससे दूर दूर और अनजान. How much he is soft on you and how much you are away from him. Huh? अनजान का तर्जुमा क्या करेंगे अनजान जी How much he is soft, he is merciful upon मेहरबान तो merciful कहेंगे. How much he is मेहरबान का सही तर्जुमा जो है because English language you have to how much he is soft on you with mercy
how much He is soft on you with mercy, and how much you are अनजान अनअवेयर तो नहीं कहेगा अनअवेयर में होता है एक आदमी को पता नहीं है कि अनजान होता वो है जो जानकर दूर रह रहा है जानकर तो वो है इरादतन वो अनजान बनता है हाँ इरादतन अनअवेयर नहीं चलेगा कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छी बात नहीं बताया है आप क्या कह रहे हैं मेहरबान अनजान मेहरबान का भी सही तर्जुमा है look how much he is merciful on you with softness गलत तर्जुमा ये वो गलत कर रहा है ये मतलब थोड़ी बता रहे हैं आप जिस अल्फाज में काइन वाइन भी नहीं है टेक्सटाइल काइन कह रहे हैं he's saying how much Allah is kind with you with softness and mercy and how you are away from him intentionally. Yeah, you know you know him, but intentionally you're away from him. How he is softly and mercifully he is kind to you, and how you are ignoring him intentionally. Ignoring him intentionally. अनजान का तकरीबन तर्जुमा इस तरह बनता है अनजान का you're ignoring him intentionally. You're ignoring him. पता है फिर भी वो अनजान बनता है हाँ ऐसे ही he's ignoring Allah intentionally. He knows him. He knows about Allah, but he is intentionally ignoring Allah. You do not know what it means to be a person who is closer to his master. He said, "Oh my dear, come to me. I will tell you a story." You know the Sheikh, he wants to tell us a story. वो एक कहानी सुनाना चाहते हैं बुजुर्ग Are you understanding my translation, Nazar? But are you understanding what I'm trying to say? Is it making sense? I just want to make sure that am I translating it properly? Is the message getting transferred or not? It's heavy, but it's true. सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास बहुत से गुलाम थे मगर सब शौकत और दबदबा के थे इश्क और मोहब्बत के लिए अगर कोई था तो एक अयाज था गवर्नरियां खाली होती तो एक एक गुलाम जायदादों पर गवर्नर मुकर्रर किया जाता खुशी से चले जाते एक वक्त एक जायदाद गवर्नरी की खाली हुई उस जायदाद पर सुल्तान ने अयाज का नाम लिखा वो बहुत रोने लगा सब ने कहा ये तो खुशी का वक्त है एक मुल्क तुझको बादशाह बना रहा है क्या कोई रोने का मौका है अयाज ने कहा अब तक तो मैं बादशाह का मोनिस व मुहरम राज था अब और खदम व हशम के जैसा हो गया इससे मेरा मर्तबा घटा या बढ़ा ऐसे वक्त खुशी का क्या मौका पहले तो मैं करीब था जब गवर्नर मिल गई तो मैं दूर हो गया
इस वक्त लोगों को अयाज ने जवाब दिया और कहा, तुम सीधे रास्ते से बहुत दूर जा पड़े हो। तुमको खबर नहीं कि बादशाह सलामत मुझको अपने से दूर कर रहे हैं। अगर बादशाह सलामत सारी दुनिया भी मेरे हुक्म में दे दें, तब भी मैं एक लहजा इनसे दूर रहने को पसंद नहीं करूंगा। जो बादशाह सलामत कहें मैं वो करने राजी हूँ, मगर एक लहजे इससे दूर रहने को पसंद नहीं करूंगा। मैं उसके मुल्क और उसके कारोबार को क्या करूं, मुझे इसका दीदार सारी सुल्तनत से बेहतर है। अगर तू मर्दान खुदा से है और कादिर और तालिब हक है और कदरदां है, तो मुहर्रम राज होना अयाज से सीख। अब्दुल्लाह ऐसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी गहरी बात है ये, इंसान अपनी जिंदगी को गौर करे। The Sheikh is saying, Sultan Mahmud Ghaznavi rahmatullah alayhi, he was a very powerful king. He was from Afghanistan. Ghazni is from Afghanistan. He was from Afghanistan, and 17 times he attacked India. 17 times? Yeah, in history, I कॉलेज की हिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ा है। पढ़ा है कॉलेज की हिस्ट्री में था। ये सामने तो आ रहा है, समझ में 17 times he attacked India. He was from Afghanistan. The Sultan Mahmud Ghaznavi, he was the king of Afghanistan, Pakistan, and part of India. राजस्थान के जरिए से हमला किया था। So he was a very pious man. Very pious man. So he would, each, of course, there were states in his kingdom. So he had around him people. So what he would do is this: if any, like you have many states, also there are many states. So if they would conquer a place, what they would do, he would send one of his close, what do you call, confederates कहेंगे ना, जो करीब के जो गुलाम कहें या जो advisors कह रहे हैं, court, he used to stay in the court, his close or confederates. He would send them, okay, you are the governor of that state. He's like a king. So when you go over there, he's like a king. He's the king of that area. So as the people would die, if the governor would die or he would get transferred, so he would send him to become the governor of that area. So people, whenever any governorship would come up, he would send him. So they would go happily. Oh, you're becoming a king. So people would go happily because of being the governor. And once a job came, a position opened for a big state's governorship. So Mahmud Ghaznavi appointed Ayaz. Go, you are the governor of the area now. When Ayaz heard that, and he saw his name came up,
He was crying. And he cried a lot. People said, this is the day of happiness. He's making you a king. And you are crying? They are you're crazy. I told them, you have lost the touch of reality. That's what I told them. Because people are saying, oh Ayaz, this is the time of happiness. He's making you a king. Ayaz said, you are not understand. You have gone off the track. तुमको खबर नहीं कि बादशाह सलामत मुझको अपने से दूर कर रहे हैं. You don't understand that the king is, creating, yes, he's creating a distance between me and him by offering me the governorship. If the king would offer me the governorship of the whole world, I would prefer not to stay away from him. I'm ready to do what the king wants me to do, but my desire is not to be away from him. His kingdom and his business, what would I do? If watching him is more valuable to me, being in the presence of my master is more valuable to me than being the king of the whole world. So the Shaykh is saying, oh people, if you understand Allah, learn this from Ayaz. And you understand this whole talk? Today is what the people they want. Oh Allah, give me money so that I can be away from you. लोग वहाँ मांग रहे हैं पैसे आए. ये पैसे आने के बाद फिर इतने मशगूल हो गए कि खुदा से गाफिल हो गए. खुदा से गफलत. हमें पैसे नहीं थे तो मस्जिद में मौजूद थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, अल्लाह से मांगते थे. जहाँ दो पैसे आ गए खुदा कहाँ याद आता है. तो वो खुदा के करीब हुआ या दूर हुआ? When you were poor and destitute, you were in the masjid, oh Allah, oh Allah, oh Allah. When the money came, now he got involved so much in his money, in his worldly affairs, that he forgot Allah. Now he has no time for Allah. माल के बखेड़ों ने खुदा से दूर कर दिया. The entanglement of dunya has taken him away from his master, from his Lord, from Allah. Yes, he got entangled into it. He got sucked into it. He dove inside the sea of world. This is what the Shaykh is saying. That you, oh human being, and the Shaykh is saying, oh human being, you got so much entangled into the affairs of dunya that you have forgotten your master, you've forgotten your creator. Look how much Allah was defending you.
गरज इंसान की पैदाइश के मुताल्लिक फरिश्तों वगैरह का जो सवाल था उसका खुदा ताला ने कौलन मुजमलन ये जवाब दिया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, उनकी पैदाइश में जो हिकमत है वो तुमको मालूम नहीं, उसको हम जानते हैं। और अमलन इस तरह जवाब दिया, इन्ना अरदना अल-अमानत अला अस्समावाति वल अर्दि वल जिबाल, फरिश्तों के और दूसरी मखलूक के कायल करने के लिए आसमानों पर और ज़मीन पर और पहाड़ों पर और फरिश्तों वगैरह सारी कायनात पर अमानत यानी दर्द इलाही मोहब्बत इलाही पेश करके कहा, कौन है जो हमारी इस अमानत को लेता है। फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा, इस अमानत के लिए और उठाने का मादा ही न था, इसलिए सब इस अमानत के उठाने से डर गए, इसके लेने से इनकार कर दिया। किसी में काबिलियत ही न थी जो उसको लेता और बारे गरां को उठाता। वह हमलहल इंसान, अल्लाह का खलीफा, उसी ने इसको उठाया, उसी ने इस अमानत को उठाया। क्यों ना उठाता, ये इसलिए पैदा हुआ था। सबसे अव्वल उसी ने सर झुकाया और अर्ज किया, मुझे दीजिए, आप दें और मैं न लूं। मेरे महबूब, आपका बार गम उठाना मेरा ही काम है। कैसे मज़े का वक्त है इसमें आपकी मोहब्बत दिल में भरी हुई तड़पा रही हो। So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, the Shaykh is saying that the angels, when they were asking these things, so Allah subhanahu wa ta'ala answered, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Excuse me, you have no idea what you're saying. I know and you do not know. You do not have, you don't understand the wisdom behind it. Why? What is the wisdom? What is the wisdom behind it? You will not understand. Then Allah subhanahu wa ta'ala, He answered, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Allah said, I'm going to put this amana on the heavens and the earth and on the mountains. The love of Allah and the connection of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala presented this to the creation, and the creation said, I'm sorry, we can't handle it. It's not in order. It's not in us. It's inside us. We cannot handle this. They don't have the capacity to handle this. Amanat. فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. And they said, please, I'm sorry, we cannot do it. They never had this, what do you call, the capacity to hold this. So who held this? حَمَلَهَا الْإِنسان. It came in the human being. Allah subhanahu wa ta'ala gave it to the Khalifa of Allah to have this. And he is the one who held it. And why he came? Why the reason he held this thing? Because the thing is this: he put himself forward. He said, "Oh Allah, you give it to me, and I don't take it. Oh my Allah, you are giving it to me. How is it possible that I would not take it? Your giving means you will give me the capacity to handle it." إنه ये कुरान कह रहा है. मेरे महबूब, तेरे तेग दुश्मनों को नसीब न हो, दोस्तों का सर सलामत रहे कि तू उन पर खंजर आजमाई कर.
अल्लाह ताला तारीफन फरमाया इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, मेरे महबूब इंसान पर एतराज करने वालों, देखो ये वही इंसान है जिसको तुम जालिम जाहिल समझते थे, कैसे वो हमारी मोहब्बत का मतवाला निकला। यूं समझो इश्क और मोहब्बत बारे गरा उठाना और इस बला व मोहब्बत को गले में डालना दानिशमंद और दूर अंदेश से कब हो सकता है। ये ऐसे ही लोगों का काम है जो अपनी जान पर मुसीबत गवारा करें और दूर अंदेश न करें और ये कहते हुए आगे बढ़ें, जिस अमानत का बोझ आसमान भी ना उठा सका उसका क़ुरआ मुझ दीवाने के नाम पर ही पड़ा, इस वजह से कि आशिकों का काम ही निराला होता है। अगरचे दूसरी मखलूक उसको बदनामी समझे, हमारे पास नंगो नाम कोई चीज नहीं। बड़ी अजीब बात है, this is amazing thing if a person, if he contemplates, because this ayat is very deep. Allah subhanahu wa ta'ala, he said that after he said that we're going to hold this amanat and nobody could come forward this creation, the insan said, oh Allah, I'm ready, give it to me. إنه كان ظلوما جهولا, ظلूम भी है और जहूल भी है। Allah is saying, oh human being, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तारीफन फरमाया इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला, because this is something very deep meaning what the Sheikh is saying. He is saying, oh people who is criticizing other humans, if you think he is zaloom and jahul, jahul means he has no farsightedness in the meaning over here. He doesn't have the farsightedness. So the Sheikh is saying he comes forward and he takes the love of Allah. He doesn't have the farsightedness. The reason he's saying is because the one who is ये आशिकों का काम है कि वो दूर अंदेशी को देखते नहीं. That's what he's saying. This is the job of the people who are in extreme love, that they don't look at the farsightedness. The person who's in extreme love, do you think would he look at consequences and what is going to be the ramifications of this actions which I'm taking? Do they contemplate on these things? For example, if a person loves somebody, so he sits and then he makes a plan B, plan A. That if I'm going to love this individual, what would be the ramification after 1 year or after 5 years? Where will I end up? Does it make sense to me to love this individual or not? Somebody who loves, is this what they do? अगर कोई इसकी से इश्क हो गया तो इस तरह बैठ के प्लान करता है कि यार अच्छा मैं ये इश्क कर रहा हूँ, उसका 1 साल के बाद क्या होशर होगा मेरा, और मैं 1 साल बाद से मेरी फैमिली लाइफ में क्या होगा, मेरे बिजनेस को क्या होगा, मेरी जॉब को क्या होगा, जरा मैं सोचूं तो सही। आशा सब बैठ के सोचते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी मेरी, आशा बैठ के सब सोचेगा।
मौलाना फरमा रहे हैं, अब्दुल्ला शाह साहब फरमा रहे हैं कि तारीफन अल्लाह ने फरमाया इन्नहु काना ज़लूमन जहूरा। क्या भाई, क्या बात है इंसान की, देखो। और बुलावा मोहब्बत को गले में डालना दानिशमंदी और दूर अंदेशी कब हो सकता है? He's saying, look at this human being. How is this person? There is no, he doesn't do any plan because the love, a person when he comes in love, he does not have farsightedness or to think and to ponder and to worry what's going to happen. He doesn't do these things because he has the love. So he does. He closes his eyes and says, "I don't care. I need to go with him. That's it. I don't care what the whole world says. I don't care about the consequences." जिस अमानत का बोझ आसमान भी ना उठा सका, इसका कुरान मुझे दीवाने के नाम पर आ पड़ा। इसी वजह से आशिकों का काम ही निराला होता है। That amanat which the heavens couldn't hold, they put the lots. He's saying in this, in a very beautiful poetic style, he's saying that lot came on my name. That's the reason people, people of love have different laws who they deal with. They don't deal with the laws of logic. The people of love, are their dealings are based on the laws of logic and intelligence? They don't do that. क्या अकल से और खिरद से और क्या कहते हैं इस तरह ये आशिक काम करते हैं? अगरचे दूसरी मखलूक उसको बदनामी समझे, हमारे पास बदनामी नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए बता रहे हैं बुजुर्ग, people would think that what you're doing, this is बदनामी। क्या कहेंगे? हाँ, बदनामी क्या कहेंगे? बदनामी means a person, he gets defamed. Defamed. People think this is defame, but if you're in love with somebody, defaming doesn't mean anything to you. You can defame me as much as you want. As much as you want, you can defame me because मैं तो आशिक हूँ, मुझे डूब के जाना है। बदनामी इनफेम पता नहीं क्या। हाँ, तो बदनाम हुआ। तोहमत शोहमत इसलिए लगेंगे कि लगेंगे, इसमें तो कह रहे कुरान कह रहे हदीस कह रहे तुम पे लगेंगे तोहमत। अजीब बात ये जिस नबी ने जो खुदा की तरफ चलेगा उस पर जादूगर का बहुतान लगेगा, पागल का बहुतान लगेगा, ये सब बहुतान लगेंगे। अब देखिए, anybody whose journey is towards Allah subhanahu wa ta'ala, he will get this defamation that he's a magician, he's a what do you call, he's a majnun, he's crazy. Because why they have to come up with these two is because the reason is this, because his actions are such which would not make sense according to the logic. They said that this guy's crazy. Yes, they take you as a crazy. He's a crazy. Crazy है, आदमी पागल है तो. But then when you see the effects of that on the individuals, they say that people don't get attracted to the crazy man. There's a lot of crazy people walking on the streets, homeless. So they're crazy, they're walking. Do the people get attracted towards them? In fact, they repel them. People get repelled from them. They don't get attracted towards them. But in this case, people are getting attracted. So how to
fit that thing. So they put two labels, crazy plus magician. So he's doing magic to attract the people towards him. You have pagal. इसे कुरान कह रहा है इन ويقولون إنه ساحر مجنون. He's a magician and he's crazy also. Somebody of offering all the women of Quraysh, all the money of Arab, and you're making him the king, and he's saying, no, I don't want it. They will say, I mean, can somebody give you a better job than this? Yeah, for example, if this kind of a job somebody is getting offered, that will make you the president, not only of this country, of the whole world, make you the president of the whole world. And we will give you all the money which we have. Okay, somebody can be the president, but with no money, a poor, destitute, a poor guy, broke. No, we'll give you all the money. I will give you all the women. Chalo bhai. अच्छा ठीक है आप चले. And then this guy says that I don't want it. वो पागल ही है तो ऐसे ऑफर को नहीं लेता. This guy is not taking this offer. He's crazy. But then, if he's crazy, how come people are coming to him? Oh, he's doing amliyat. Amliyat कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं. He's doing magic. And he's doing wazifa. And he's doing this to attract the people. Because the reason is this, that, my dear brothers, because the human being thinks the success is in money and power. That's what the human being thinks. The success is in money and power. And power means the more people will come, the more power you have. इसीलिए मजमे पे लोगों की नजर होती है फौरन. लोगों की नजर मजमे पे क्यों होती है कि मजमे का मतलब ये पावर है बस. कितना मजमा आपके साथ पर ये बताओ. That's the reason people they look at the congregation. How much congregation you have? How many people? Because if you have the people, you have the power. That's what they think. Because the people think the more people you have, the more power you have. That's what they think. उनका ज़हन इस पे चलता है मजमे पे मजमा पकड़ो और बंदा लाओ बंदों को घेरो जितना मजमा आएगा उतना आप कामयाब हैं. यहाँ बात हो रही है जितना तुम खुदा के करीब उतना कामयाब हो. मजमे का ताल्लुक ही नहीं, कहानी है ही नहीं मजमे की. मजमे की थोड़ी कहानी है. The power, when they see money and power means that the more people you have, the more people you have, the more successful you are, because then you have power. आपके पास फिर जब मजमा आएगा तो ताकत होगी ना. इसलिए हर कोई मजमे को बढ़ाने के चक्कर में होता है. That's the reason you see people, they are working to get as many people as possible. इतने मजमा आ जाए, इतना मजमा आ जाए, इतना मजमा आ जाए. मुसैलमा ने कहा, Musaylama, he came to Rasulullah. He came to Rasulullah. He was a Katib Wahid and he became Murtad. मुसैलमा ने क्या किया, कहा कि क्या कहते हैं, हम एक डील बनाते हैं. डील ये है कि शहरी इलाका आपका, देहाती मेरा. डील है शहरी इलाका आपका, देहाती. शहर में तो आपको मैं अच्छी डील दे रहा हूँ, आपको शहरी इलाका दे रहा हूँ, पूरा मजमा दे रहा हूँ आपको, पूरा देहाती मेरे पास. लेकिन थोड़ा ज़रा क़ुरैश यूजुअली उनकी डील ज़रा सख्त होती है, मैं समझता हूँ. तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अलैहिस्सलाम ने, मेरा एक तिनका था, छोटी सी लकड़ी थी. भाई मैं तो तुझे ये भी नहीं दे सकता, मेरे पास ये भी नहीं है. तू मजमे की बात कर रहा है. Musaylama Kazzab, when he declared prophethood, he said, listen,
He's giving an offer to Rasulullah. The urban areas are yours. Urban area, the cities, I'll give it to you. And the what do you call it? Not the urban, the desert and the huh? No outskirts. I mean you know, huh? Not the urban area. What is the opposite of that? The rural areas. Rural. I will take the rural. You take the urban. I mean, like the cities will belong to you, but the rural will belong to me. But I know the Quraysh are not good in doing business with you. That's what he's saying. So his focus was he thought that Rasulullah is also behind the power and money. He thought that like any other human being is also behind money and power. So then let's make a deal. Let's get a deal. You take the cities, I'll take all the rural. But I know that for a fact that the Quraysh ain't good in doing business. So business doing saying here, Quraysh. So Rasulullah had this small stick, said, this also I cannot give you. Or remain the cities and the. But the people, you see, the people who are not connected with Allah, their focus will be money, and their focus will be people and money. Majma, law, power. The लोग समझते हैं इसमें power है. People think that having people is having power. That's what they think. And that is a sign of success. मजमा होना ये कामयाबी की निशानी है कि इंसान इसको तो मुसैलमा भी यही समझा. Musaylama, he also thought the same thing. So you have the people. I want to get the people. हालांकि हमेशा नबी के साथ अक़लियत होती है, अक्सरियत नहीं होती. हमेशा अक्सरियत होती है, अक़लियत होती है. With the prophets, you will see always minority will be with the prophet, majority will be against him. हर नबी ऐसे ही होता है. हर नबी के साथ ऐसे ही होता है. अक़लियत उनके साथ होती है और क्या कहते हैं अक्सरियत तो दूसरी तरफ होती है. Always the minority is with the prophet, majority is against. Always against. हर वक्त against होती है. But because the human being, the connection of Allah is not there, our mind starts working on the same pattern. That we also think that we are after power, after money, and after the people. ये चीज़ों के पीछे, पैसे के पीछे और इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Now Rasulullah says, what happens when you get the power? Your lifestyle changes. So when you get the money, what happens? When you get the money, what happens? Lifestyle changes. A beautiful palace, Rolls Royce, everything, the money, the food, everything, it changes. पैसा आते ही इंसान के अंदर. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he is on his peak, at the time of his death, his equipment is mortgaged. रहन mortgage कहेंगे रहन को mortgage, not with loan. I mean like that. And he's so destitute that he puts his equipment with a non-Muslim person to get some money to fulfill his needs. ये आपकी मौत के वक्त की हालत है.
कि पैसा इतना कम है आपके पास, the amount of money which he has. This is the money which he, हाँ गिरवी रखना, गिरवी को पता नहीं मॉर्गेज ही कहना इंग्लिश में, चेक कर लो आपका क्या कह रहा दोस्त, देखिए देख लो. So that he is, he is putting his thing out just to fulfill his needs. So what happens? तो fulfill अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम क्या करें? मॉर्गेज ही करें. सही. The Rasulullah sallallahu lifestyle. What is the lifestyle of Rasulullah sallallahu at the time of his death? How much his family has made money, and how much cash he had. जिंदगी के अंदर क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे जैसे वक्त गुजरते जा रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? At the time of his death, you see, don't forget, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he became prophet, he was a very rich man. Do you know that? When he became prophet, he was very rich. When he became? Yes. Why? Quran is saying, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Quran is saying this. Quran is saying that he was very rich. He was, وَوَجَدَكَ عَائِلًا, he had nothing and he became rich actually. Isn't this what the Quran is saying? Quran कह रहा है ना कि जब आपके पास कुछ था नहीं, आपको हमने गनी कर दिया. So when he became a prophet, he was very rich. So when he was about to, but at the time of his death, what happened at the time of his death? At the time of his death, what is his situation? His equipment is mortgaged. Aisha radiallahu ta'ala anha says, Fatima radiallahu ta'ala anha says, Fatima radiallahu ta'ala anha says, that Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha, she was the one who says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's sakarat started. Sakarat means is the last part of his life when he's about to die. The person is about to die is called sakarat. जब सांस उखड़ने लगती है, the person is about to die, so his breath starts, his breathing is fluctuating now. It's not, constant. It's not normal breathing now. And then he says that this was the night of the demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. दुनिया से जाने का वक्त, जैसे आपका दुनिया से जाने का वक्त हो रहा था उस रात, और उस रात में बीबी फातिमा फरमाती है, बीबी आयशा फरमाती है कि घर में हमारे पास तेल नहीं था चिराग को जलाने के लिए. And she's saying that we didn't have enough oil to burn the lamp the night of the demise of Rasulullah. जिस रात आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, उस रात क्या है? घर में चिराग नहीं है. हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त आपको नबूवत मिली, उस वक्त आप गनी थे. कुरान ने जिसकी गना की गवाही दी. और बीबी खदीजा के बारे में हज़रत मुआज़ हसन गीलानी
खातिम नबी नबीउल खातिम किताब है, उन्होंने कहा कि बीवी खदीजा मक्की की मालदार नहीं, अरब की मालदार तीन औरत थी. She was not like the richest woman of Makkah. She was the richest lady of the Arabia. Of the Arabia. यानी मालदार तरीन अरब की औरत कौन थी? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा. बिलियनर. चलो, उम्मत को सबक सिखाया इश्क की राह है. तो जब शुरू हुआ तो इधर थे, ऊपर जाना चाहिए ना, उधर इधर आए. बिल्कुल थे यहाँ से, कहाँ रहे वहां से ऊपर जानी चाहिए ना. बिल्कुल आंखों में पैसे बन जाते हैं इंसान के आखिरी उम्र में. और आपकी जिंदगी ऐसे नीचे की तरफ इतना. तो किसी ने कहा, उनसे पूछा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि तेल आता तो क्या करते आप? Somebody asked. He said that at the time of the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, on the night of his death, there was no oil to lamp the house of Rasulullah, the room of Rasulullah. Hujra. Said that आप तेल आता तो क्या करते? तो कहा जब तेल आता तो हम उसको भूख के मारे पी जाया करते. जब तेल आता तो हम उसको भूख के मारे पी जाया करते थे. कि when the oil would come, instead of putting it in the lamp, out of hunger we would drink that oil. सोने पर केरोसिन पर पेट्रोल और तो नहीं था, ऑयल था, ऑलिव ऑयल था, पता नहीं जब. तो कहा हम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रात वफात हुई है उस रात घर में तेल नहीं था कि तेल जलाकर तीमारदारी कर सके. On the night of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there was no oil in the house of Rasulullah. No oil, minimum, no oil to तीमारदारी, to क्या कहेंगे तीमारदारी को? To take care of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There was no light in the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Whatever you get, he gives you, right? No, nothing. Nothing. When he started his life as a prophet, before that, he was the richest man. Quran के वजदक आयरन अल्लाह कितना वो गनी बनाया. He was a rich person. But when he reached the night of his death, he's saying that there's nothing to ignite or kindle the lamp in the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why Bibi Fatima radiallahu ta'ala anha, she said that صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا ماذا على من شم تربة أحمدي ألا يشم مدى الزمان غواليا. मुझ पे वो मुसीबतें पड़ी, मुसब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा, मुझ पे वो मुसीबतें पड़ी, लौ सुब्बत अल अय्याम सन्ना लयाल, अगर दिन पर पड़ती तो दिन रात बन जाता, सूरज की रोशनी खत्म हो जाती अगर उस पे वो मुसीबत पड़ती जो मुझ पर पड़ी है. मादा अला मन शम्म तुरबत अहमदी अल्ला यशुम मद ज़मान गवालिया. अगर महंगे महंगे इतरों का क्या सूंघ रहा जिसने नबी सब की कब्र की मिट्टी सूंघ ली. पर कहने लगी ए फातिमा, he was saying that I've been inflicted with such pain that if the pain was put on the day would turn into night. ماذا على من شم تربة أحمدي. What is there to smell different fragrances? The one who have smelled the fragrance of the qabr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then Hazrat Fatima said, "Oh Bilal,
how you people had the guts to dig the grave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh, Bilal, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि आप कब्र खोदना शुरू करें अल्लाह के नबी से? How you had the guts or the himmat to even dig the grave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? And when the night came, that night, Salman radiallahu ta'ala says, जब फावड़े मारे जाने लगे तो औरतों की चीखें निकल गई, अल्लाह के नबी तो कब्र में चले गए. That when the night came and they started digging the grave of Rasulullah, women were screaming, Allah Rasul has entered inside the qabr. So how his journey started and where did his journey end up? आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई? Where his journey started and where did his journey end? At the end of his life, how उनकी जिंदगी कैसी थी? मेरे भाइयों, क्या बात चल रही थी इससे पहले? तो अल्लाह ताला, Allah subhanahu wa ta'ala, when he, what do you call, a person, when he is turning towards Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's Rasul, I was saying, Rasul sallallahu alaihi wasallam, that's why, when he said to Muslim, this also I cannot give you. Because people think, I was saying, that the power and capital, that the people and the majma and things, these are not the Mustafa निकल गया बता रहा. हाँ, because I think people think that because of the people, this is where the power lies in. If you have the people on your side, then this is where the power is. और यकीन इन पर है. The यकीन of an individual is another thing. कैसे हम नवा हो जाएं. That's why Anbiya alayhi salatu wassalam, with them you'll only see who joins the Prophet. First of all, rich people don't join the prophets. Who join the prophets? Poor. Poor people. Who join the prophets? Poor people. Yeah. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Allah Ta'ala Quran में कह रहा है, let's say in the Quran that बहुत ही सख्त आयतों में तर्जुमा करते हैं, हिम्मत नहीं मेरी, बहुत सख्त आयतों. तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की, अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो साथ आपके साथ जिस लोगों ने लब्बैक कही, गरीब थे. The one who accepted the call of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they were poor. Number one, poor, and number two, a minority. Poor and minority. And mostly the people who followed him were youngsters. तीन उसमें थी, नौजवान थे, गरीब थे और थोड़े थे. Why? बड़ी मगर से वो सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु थे, ऐसे एक दो लोग, वो तो बिल्कुल बुरे थे. हज़रत अम्मार इब्न यासिर, यासिर रज़ियल्लाहु ताला. Why the reason? You see, why only the youngsters? It's because
When a person is of older age, he has influence. Young has no influence. Young has no influence. Plus, young has no money. Usually, a person accumulates money when he's old. Even if he has the money, he will when he, if he would follow Rasulullah sallallahu, he would lose his income. He would lose his estate. क्योंकि जायदाद बेचारे से महरूम हो गए. मुसा इब्न उमर हालांकि मालदार थे, लेकिन जब ज्वाइन किया तो उनके हाथ से वो चली गई वो चीज. दुनिया उनके हाथ से निकल गई जो थी उनकी. So, हाँ, अल्लाह नबी अलैहि was in 40s, 40 साल की उम्र में. तो the youngsters, they were with Rasulullah sallallahu, and usually the youngsters, they are poor. Of course, when a person is older age, they have some money with them. A person of young age, no, he is still struggling. ये कैसे खड़े हो गए अपने पाँव पे, ज्यादा मत सोच रहे. चलो बहुत बड़ा नौजवान का मजमा हो वो भी नहीं, थोड़े से ही वो भी. And the people who are following him also are very less, few. तो खुदा अपनी ताकत पर दिखाता है. Allah shows his power. खुदा अपनी ताकत का इजहार इस तरह करते हैं. This is how Allah subhanahu wa ta'ala shows his power. तो मेरे भाई ये पूरी कहानी मोहब्बत की है. This whole deal is the deals of love. अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने ताल्लुक़ और अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए. ठीक है ना, इसमें जिक्र कर लेते हैं. like the blind man, so Abbas. Yes, ऐसे ही है. That's correct. You're right, my dear. So the outside looks to be poor, but there's a lot left. How funny. Yes. Oh, well, yeah, they got a big here. Very funny. Miskin. Ah, इसको उठा दो यार. استغفر الله الذي لا إله القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب
قل هو الله الصمد الله الصمد قل هو الله الصمد قل هو الله قل هو الله الله أحد يا الله صلى الله عليه وسلم هذا آدم عليه السلام ورشيد عليه السلام نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام هاجر عليه السلام هذا سليمان عليه السلام داود عليه السلام خضر عليه السلام موسى عليه السلام إلياس عليه السلام يا الله السلام عيسى عليه السلام حمزة رضي الله تعالى علي رضي الله تعالى فاطمة رضي الله تعالى الحسن رضي الله تعالى الحسين رضي الله تعالى القاضي الجيلاني رحمة الله عليه سلطان باهور رحمة الله عليه محي الدين ابن عربي رحمة الله والإلياس أبقى ويسوس وجد الرسائل رحمة الله عليه نور السابق الله ما سمعك وعجب وعبسان يا الله وعيد الإشاء سابق وعيد السلطان دادا فولا عليكم أعبد الله الله सब कुछ का सब नसीब सब कुछ का सावा अता फरमा لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 الله
الله الله الله الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشكور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء قدر الدجى قدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين
سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين برب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون نور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم 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 صلى الله على حبيبي سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبي سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه 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 سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه
سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اجزي عنا وعن والدينا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن قومي. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم يا شافي الأمراض اشف الوالدة واشف الوالد واشف الأهل واشف جميع من أوصانا وأبو نبي وعزير وآباؤنا. اللهم ارزق شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم رب هب لي من لدنك وليا، رب هب لي من الصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعلنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء عندنا وخشيتك أخوف الأشياء عندنا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي عظمي نورا وفي عصبي نورا وفي لساني نورا وفي بشري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا، من أمامي نورا ومن خلفي نورا، من فوقي نورا من تحتي نورا. اللهم اجعل لي نورا واعطني نورا واعظم لي نورا واجعل في نفسي نورا يا نور السماوات والأرض، يا ملك السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا خلاق السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض،
يا بديع السماوات والأرض اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله اللهم اشف الأهل والأخوان والأخت وارزقهم شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل